Okay, chapter number 5, it's about understanding clear main body paragraph. This is where clear examiner is going to mark you. A main body paragraph is the central section of your Ielts Task 2 essay where you present, explain, and support your ideas. 3 points. You present your idea, you explain your idea, and then you support your idea with examples. If the introduction tells the examiner what you will discuss, look, if the introduction tells the examiner what you will discuss, in thesis statement, we tell the examiner that what you will discuss, right? Then, and the conclusion summarizes your position. Look, there is a burger. Suppose let's take an example of any of the burger. Mhm. Let me a bit clear you people. Am I visible? Yes, Okay. burger. Okay. Let's take example for this. Look at this burger. Your essay is like this burger. The first, Claire, Introduction. this is your introduction. The last, Brett, this is your conclusion. And can you see the mid ingredients? This is your main body paragraph. Main body paragraph where we need to include everything, not in the introduction part. And if you just look at its size, Claire. So introduction, there is difference between introduction and conclusion. Can you see the last, Yeah, Claire? Braid. That's quite short, Claire. That's quite small as compared to the introduction. अब yeah, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? आप लोग के साथ बड़ा मसला क्या है? स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंट्रोडक्शन में जो उनके जहन में आता है दे कीप राइटिंग इट। इंट्रोडक्शन इसके लिए नहीं है कि आप मतलब वहां पे एक्सप्लेन करें। इंट्रोडक्शन इस चीज के लिए होता है कि यू वांट टू टेल द एग्जामिनर व्हाट यू विल डिस्कस इन द मेन बॉडी पैराग्राफ। और कंक्लूजन इस चीज के लिए नहीं होता कि आप डिस्कस करें उसमें कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। कंक्लूजन सिर्फ इसके लिए होता है कि अपने पोजीशन को आप कंक्लूड करें, समराइज करें। दैट्स ऑल। आप लोग वे यू पीपल मेक मिस्टेक दैट इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आप लोग का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इतना बड़ा होता है कि मेन बॉडी पैराग्राफ से भी ज्यादा। सो दैट्स अ मिस्टेक। सो मेक श्योर व्हेन यू राइट इट क्लियर कि आपको हमेशा ये बर्गर जहन में रखना चाहिए कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है। Am I visible? yes, sir. Chapter number 5 is visible now? Yes, sir. Yeah, Okay. अब यहां पे yes, sir. देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करें। If the introduction tell the examiner what you will discuss, इसका काम क्या है? Tell the examiner what, Claire, you will discuss in the essay. Do we discuss all, Claire, the data in the introduction? No. And the conclusion only summarizes your position. But the main body paragraphs are where you actually discuss it. आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं? आप डिस्कस इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में कर रहे हैं। सो वी नेवर डिस्कस थिंग्स क्लियर, वी नेवर प्रोवाइड डेटा क्लियर एंड द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन पैराग्राफ। तो अब यहां पे मैंने क्या लिखा है? द बॉडी पैराग्राफ्स आर द हार्ट ऑफ योर essay. ये है। Approximately 7% of your marks come from the quality of your body paragraphs. They make up the majority of your word count
सबसे ज्यादा मतलब इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने इंग्रेडिएंट अभी आप लोग को शो किया. सो नाउ द इंग्रेडिएंट क्लियर यू कैन फाइंड इन मेन बॉडी पैराग्राफ. So majority of the words you will have clear, that is the words are where you may find out in your main body paragraph, not in the introduction or conclusion, and demonstrate your ability to think critically, organize ideas, and express yourself in English. अब इंट्रोडक्शन में तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं लिखना चाहते. इंट्रोडक्शन में तो सर पैराफ्राइजिंग के होती है, स्टेटमेंट है कि आप ये पैराफ्राइज कर रहे. पैराफ्राइजिंग इसलिए कर रहे कि मैं एग्जामिनर को ये कहना चाहता हूं कि भाई आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, और इस लेवल तक मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं कि आई कैन इवन री राइट इट इन माई ओन वर्ड्स. ये है पैराफ्राइजिंग. फिर तीसरे स्टेटमेंट में आप ये लिखना चाह रहे कि एग्जामिनर को आप ये कहना चाहते हैं कि ओके, मैं अब आगे जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स है उसमें मैं क्या लिखूंगा, व्हाट आई एम सपोज टू राइट देयर, व्हाट आई विल डिस्कस इन द एसे. तो वहां पे तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. वी डोंट राइट डाउन एनी ऑफ द एक्सप्लेनेशंस देयर. तो मेक श्योर यू पीपल अंडरस्टैंड दैट. अब यहां पे हमारे पास जो गोल्डन रूल है, वन मैन आइडिया पर पैरा. सबसे पहले आई जस्ट वांट क्लियर कि मैं आप लोग के you need to understand that what actually clear paragraph writing is. Then later on we will study about the structures. This is the single most important rule for writing. Golden rule yahan pe maine clearly mentioned कि each body paragraph must contain how many ideas? One main idea. And then that one main idea needs to be fully developed. One idea, and that one idea, clear, has to be fully developed. With what? With explanation and specific example. So as I mentioned earlier, so that one idea, it has to be explained and supported. तो support किस चीज से आ रहा है? Example के साथ. So the most common mistake clear students make is listing multiple ideas. Student क्या कर रहे हैं? गलती कहां पे कर रहे हैं कि student, for example, if I just ask someone कि problems in big cities, तो स्टूडेंट क्या कहेंगे? पावर्टी, क्लियर, एजुकेशन, health, and they can talk about, for example, pollution. They can talk about, for example, traffic. अब यहां पे देखिए, अब प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? दे जस्ट ओनली प्रेजेंट आइडियाज. प्रेजेंट आइडियाज. But none of the idea is fully developed. With what? With explanation and example. ये गलती कर रहे हैं आप लोग कि मतलब आप प्रेजेंट तो कर रहे हैं, यू प्रेजेंट आइडिया, बट नन ऑफ द आइडिया इज प्रॉपरली क्लियर, एक्सप्लेन एंड सपोर्टेड. अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है? when we start reading your paragraphs, तो आप लोग ये कर रहे हैं कि द एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को तो एक्सप्लेनेशन और सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग क्या प्रोवाइड करें? ही डजंट वांट टू सी अ शॉपिंग लिस्ट, कि आप सिर्फ आइडियाज को प्रेजेंट करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पोल्यूशन इन बिग सिटीज, तो पोल्यूशन इज योर आइडिया एंड दिस आइडिया हैज टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन एंड देन सपोर्टेड विद एन एग्जाम्पल. अब ये बैड एग्जाम्पल है 5 बैंड के लिए, नॉट मोर देन 5 बैंड. फॉर एग्जाम्पल, द रीजंस why public transport should be free are diverse. First of all, it is a great way for people to save money. Up, number one. Number two, first of all, let me highlight them a bit to clear you. People will walk more and use steps, which is good for people's health. Besides, another linker. People can feel safer on buses and trains if there are more people on them, especially for people who use transport late at night. Furthermore, if public transport is free, people would use their cars less. So this would improve the problem of air pollution in many cities. Therefore,
अब देखिए, अब इस स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, इट्स अ बैड एग्जांपल, दैट ही हैज ओनली listed ideas. And how many ideas he has listed? Four ideas. There are four ideas. And none of them is fully developed and supported. नंबर वन, अब एग्जाम्पल है इसमें, नो एग्जाम्पल, ना एक्सप्लेनेशन है, ना एग्जाम्पल है. So what does it mean? He keeps writing, mentioning about ideas. अब इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, वोकैबुलरी क्लियर. सो प्रॉब्लम्स ये है, नो क्लियर टॉपिक सेंटेंस, नंबर वन, फोर आइडियाज लिस्टेड, नन डेवलप्ड, ओवर यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. अच्छा जी, एक चीज मतलब आप जहन में रखें कि यहां पे जो लिंकिंग वर्ड्स है ये आपको देख रहे, मेक श्योर दैट यू आर लिंकिंग वर्ड्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं, दे आर सपोज टू बी नेचुरली यूज्ड. अगर एग्जामिनर को यह पता चल रहा है कि आपने अपने पैराग्राफ में लिंकिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए, दे आर नॉट नेचुरल, दे आर अननेचुरल और ओवर यूज है, तो ये लाइक दिस इज व्हाट लाइक एग्जामिनर ही डजंट लाइक इट. Usually, teachers like they will instruct you try to use more linkers, more and more linkers, but these linkers are not used naturally. अब यहां पे वाजे जो बड़े बड़े लिंकर्स है जैसे ये है, सो एग्जामिनर वोंट गिव यू बैंड फॉर दिस. आप लोग अगर लिंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ यू वांट टू ग्लू यूर सेंटेंसेस, दे आर सपोज टू बी ग्लूड इन अ वे दैट एग्जामिनर शुडंट कम टू नो अबाउट दैट यू हैव ग्लूड देम. देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप अपने जुमलों को ग्लू करना चाहते, जोड़ना चाहते, तो इस तरीके से ना जोड़े कि एग्जामिनर को पता चले कि आपका वहां पे क्या है, यू हैव ग्लूड देम. So make sure that examiner he doesn't come to know about this. For example, let's take the same part. And here is a good example for you. What can be good example? One idea fully developed. The main reasons why public transport should be free is that this encouragement clear away from private options is great for public health, overall health. From a physical perspective, catching a bus or a train means travelers would be less sedentary, giving there is walk, climbing steps, and carrying bags involved in doing so. This is quite, look, this is, can you see pronoun? So we try to use more pronoun. This is quite different to driving a car where a worker or student goes from door to door with minimal clear exertion required. Mental health would also be improved. I have mentioned also would be improved given that the stress of battling peak or traffic would be removed. Leaving people time to read or view videos they enjoy on their electronic devices is a leisure activity. Taking the city of Clare, Brisbane is an example. Commuters, they are often clear. There are often seen reading or chatting with others after a long day at work or study, avoiding the gridlock that can be seen during afternoon peak. First of all, if you just start reading that, we have clearly mentioned it's all about overall people's overall health, and that's your clear topic sentence. After that, whatever we have explained from multiple angles under one theme. We haven't changed our ideas. We haven't mentioned a couple of ideas. We have mentioned only one idea under clear one theme only. And then we have provided a specific example, and then we varied our vocabulary as well, and the linking words we have used, they are quite natural. Like if you just read, we have glued our sentences with the help of pronouns and linking words, but you can't even see them. Like this is, can you see this is, can you see from and then you can find pronouns like there are clear, and even like we have taken example, this is an example, but you don't understand that way we have used. What if someone tell you moreover, furthermore, clear, and then for example, for instance, and different linkers you use, because examiner he comes to know about that and he won't give you good ban. Then from tomorrow, inshallah, we're going to how we can write a body paragraph. It was something like, जो मैंने आप लोग का कल के लिए मैंने रेडी कर दिया आप लोगों को. तो कल हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ने. The first structure, that's about T structure. What is T structure? We will explain stepwise and how to develop your paragraph. Once we finish T structure, then we will study about another one that is called Peel structure, sorry. One is T and the second one is Peel structure. Then the second structure, we are going to study about Peel structure, this one. And then we will differentiate between both of them.
that which structure should I use? Which should you use, Claire? For example, should I go for T structure or P structure? Why to use T structure? Why to use P structure? And how to construct a good main body paragraph, Claire? We are going to study, inshallah, tomorrow. And this is then we will study about clear, we will develop main body paragraphs for all five types of essays like opinion, problem solutions, advantage, disadvantage. For all five types of essays, we will develop the main body paragraphs. And at the end of that, inshallah, you will be capable to write clear properly and hopefully you will achieve high band in it, inshallah. So right now, if you have questions, you can ask me, please.